हेलो ऑल। गुस्सा हर किसी को आता है और जब आता है तो बहुत कुछ अपने साथ ले जाता है, पीछे छोड़ जाता है सिर्फ और सिर्फ पछतावा, और उस पछतावे की आग में हम अकेले जलते रहते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो हम गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं? आइए हम लोग आज इसी पर एक बात करते हैं, इस तरह की कि ऐसी कौन सी वजह है कि गुस्सा आता है। तो थोड़ा हम अगर पीछे की तरफ जाएं, पहले की तरफ, तो गुस्से को समझना और भी आसान हो जाएगा। There was a time when India was world famous for its sensitivity, tolerance, hospitality, and communicability, etc. And at that time, there was a tradition of joint families. Then grandparents used to tell stories inspired by their experiences, and Tao Tai kept our tantrums on their eyes. किंतु जब से इन बुजुर्गों की बंदिशों और उनके उपदेशों को दरकिनार कर अपनी ही जड़ों को छोड़कर एकल परिवार का चलन बढ़ा है, तब से नई पीढ़ियां संवेदनशील होने लगी है। Research, we find relationships and happiness in electronic gadgets era. Even we don't know where the sensitivity left behind in the race to make money, to earn money. Children grow up amidst loneliness, stressed, ignored, and neglected in the absence of grandparents due to the trend of nuclear family. I mean to say, single family. The parents also provide them all the comforts except time, because both the parents don't have sufficient time to work for their own children. In these circumstances, to whom our growing teenagers should tell their feelings or share sentiments? कोई भी नहीं है उसमें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके आगे हमारे बच्चे अपनी फीलिंग्स, अपने दर्द को बयान कर सके, शेयर कर सके। When children feels loneliness, then they surfing social sites to explore an imaginary world where they do not get emotional support, but they reach a sleepy world of disorientation. That is why many times I used to say that parents should spend quality time with their children, not quantity time, so that our children can calm their curiosity, which is always arises in their mind. When children are happy, obviously they will also remain calm. Almost every day intolerance is increasing at home, family, offices, neighborhood, in the buses, in the train, I mean everywhere. And the psychology behind of all these things? Only frustration. In the print media, electronic media, everywhere we read, we watch, there are many incidents of road rages. Suppose one person's car was unfortunately touched by someone's car, and the people start to fighting, abusing to each other. Now, the impact of all these incidents will also be affect our children's minds, adolescents and youths too. Now, talking about the school children. अब स्कूल चिल्ड्रन की तो बात ही अलग है। उनमें तो ऐसे भी गुस्से भरे पड़े रहते हैं, खून गर्म होता है। If a teacher is scolding students for making hair properly to comes to school neatly and gracefully, then the children starts insulting teacher by abusing or hooting. Here also a reason behind of its frustration and disappointments. Frustration, inferiority complex, jealousy, etc., etc., etc.
These are the main factors work behind of zero tolerance. समाज का एक वर्ग जो किसी भी तरह से अपनी हैसियत और रुतबे से पैसे बना लिया है, और दूसरा वर्ग जिसे आम आदमी कहा जाता है, जिसकी समाज में अपनी कोई भी पहचान नहीं है, जिसने समाज में अपनी पहचान बना ली है, उसमें तो दम्भ और गुरूर आ गया है। और जो वर्ग अपने आगे आने वाले तक पहुंचने की कोशिश में है, वह तनाव में है, क्योंकि उसे आगे आने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर परिस्थितियां उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, या फिर हम यूं ही कहें कि उन्हें आगे आने के मौके ही नहीं मिल पा रहे। अब जब दम्भ और तनाव एक साथ सड़क पर चलेंगे तो मारपीट होना तो स्वाभाविक है। यानी कि जीरो टॉलरेंस का एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक असमानता भी है, क्योंकि जब दोनों टकराते हैं तो एक दम्भ में होता है जो सोचता है कि एक अदना आदमी हमारे सामने कैसे खड़ा है, and the second class people and the second category people feel so neglected and frustrated, so that they think that the first class people are surviving by snatching their rights to lead lavishly life or to hold an important place in the society. In this scenario, people would be obsessed with their activities, whatever happening around them, either at home, family or outside, and anger would keep stored inside. Children wants to secure good grades in their exams, the pressure of studying, a lot of work, assignments, the competition to leave behind their peers in scholastic, and the stressful aura in their house are make them insensitive. The ability to control such type of impulsion or anger, the ability to control such type of impulsion or anger has been learned right from the beginning stage, and this is called culture. People should learn modesty, courtesy, gentleness, etiquettes, manners, and self-control. Actually, most of the cases in zero tolerance, people are suffering from inferiority complex and resort to intolerance, show their fake pride and hide their deficiency. Another of major reasons is the conservative mindset in the family, where their male members are allowed to do everything everywhere, and females are imposed to tolerate these things. Along with this, abuse or any mental disorder in childhood can also be responsible for this zero tolerance. And abusing and assaulting to female members are also responsible for this. Now, in our society, the self-sufficiency of women is increasing day by day, and their ego clash in between both of them, which is also a big cause for divorce. This doesn't mean that I am against the self-reliance of women, but due to this, it often increases these things a little bit. The result of this zero tolerance is indisciplinarity in children and enhancing divorce rate. The solution to any problem cannot be indecency, abusing or obscenity. So, if possible, check the reasons which often get worse, and try to avoid such type of behavior or circumstances. And now, along with this, overpopulation
and global warming are also play a big role for zero tolerance. According to a research, when the animals were kept open in the lap of nature, they all were quietly kept calm. But when they were kept among the crowded, they were stimulated and tired. According to psychology, excessive expectations make a person insensitive, or too much freedom or bondage also strangles sensations. अब अति यानी एक्सेसिवनेस किसी भी चीज की हो, भावनाओं की, व्यवहार की हो, या फिर किसी भी चीज की आप ले लीजिए, अपेक्षाओं की कह लीजिए, महत्वाकांक्षाओं की कह लीजिए, इन सारी चीजों, कर्तव्यों का कह लीजिए, ये सारी चीजों का जो एक्सेसिवनेस है ये बहुत ही आत्मघाती होता है। सरकार चाहे कितने ही कानून बना ले, हम यदि उनके बनाए कानूनों में कितनी ही कमियां निकाल लें, मगर ये सच है कि आज परिवार संस्कार और संवेदनशीलता के सब आधुनिकता में और सिर्फ मैं की भेंट चढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं की भेंट, मैं यानी अहम की भेंट चढ़ चुके हैं। I would like to throw light on another reason that today teaching and teachers have also been commercialized. Today, teacher and teaching all have also been commercialized. This is the reason that the students have not had the respect for the teachers. And not for the teachers, even the parents too. एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। कहने का तात्पर्य है कि आज की युवा पीढ़ी को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, बल्कि समाज के सभी बुद्धिजीवियों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। हम या हमारे बच्चे इतने संवेदनशील तो है ही नहीं। हम या हमारे बच्चे इतने संवेदनहीन और हिंसक क्यों होते जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब किसी सेमिनार, पत्र पत्रिकाओं या एनजीओ में खोजने से नहीं मिलेगा, बल्कि बच्चों की समस्याओं का समाधान हमें खुद उसके पास बैठकर उसे प्यार से, दुलार से समझाकर, उसे समय देकर हासिल करना होगा। साथ ही साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपना आत्मविश्लेषण करना होगा। इसके अलावा शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगानी होगी, ताकि स्कूलों में संस्कारित बच्चे तैयार किए जा सकें। तभी हम अपने किशोरों को न केवल हिंसक होने से रोक सकते हैं, बल्कि हम देश को सुसंस्कारित और संवेदनशील नागरिक भी दे सकेंगे। नमस्कार।